Hi there, this is Neha Nasim from channel Wisdom back with my another video which is based on the microbial diversity of Nitrospira phylum. Okay, so in this video we are going to discuss about the morphology, history and the role of Nitrospira in the nitrogen cycle. Okay, so let's get started. Stay tuned till the end. Okay, so first let's see the classification of Nitrospira. Nitrospira belongs to the domain bacteria in the phylum Nitrospira and the class Nitrospira, order Nitrospirales and the family Nitrospiraceae. Inside this family, the genus is Nitrospira. Okay, inside this genus there are so many species of Nitrospira. Okay, so first let's see the history. Nitrospira was first proposed by the Watson in 1986. Okay, so जब first member इसका proposed हुआ 1986 में, तो earlier it was thought that के जो Nitrospira species है, it only restricted to the marine ecosystem only, but later इसके जो members मिले तो इससे ये प्रूव हुआ कि नो, इट इज एक्चुअली अ यूबिक्विटस बैक्टीरियम व्हिच इज यूबिक्विटसली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. ओके, सो जो फर्स्ट मेंबर था उसका नाम था नाइट्रोस्पायरा मरीना, आइसोलेटेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेन, जो कि वाटसन ने प्रपोज किया था इस ऑर्गेनिज्म को. ओके, जो सेकंड मेंबर था थर्मोडिसल्फो विब्रियो येलो स्टोनी, 1994 में ये प्रपोज्ड हुआ था. एक्चुअली येलो स्टोन नेशनल पार्क में प्रपोज्ड हुआ था, वहाँ पर फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था. दैट्स व्हाई इट्स नेम वाज येलो स्टोनी. ओके, एंड द थर्ड मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज द नाइट्रोस्पायरा मॉस्कोवियंसिस, 1995 में आइसोलेट हुआ था फ्रॉम कोरोडेड आयरन पाइप in the Moscow heating system. Okay, so let's see the morphology. Nitrospira is also called as nitrate spirals. Okay, as you can see in this picture, they are actually spirals of the nitrate. They are aerobic obligate. Okay, obligate aerobic bacterium hai ye, and they are chemolithoautotrophs, means that they obtain their energy from inorganic sources of carbon. Okay, and they are nitrite oxidizing bacterium. They are gram negative and they are non-motile. Okay, and their shape varies from helical to vibrio shaped, often forms spirals. Okay, and their size 0.9 to 2.2 into 0.2 to 0.4 micrometer in size, and they grow optimally at 39 degrees Celsius. They actually require 7 to 8 का pH उन्हें लगता है grow करने के लिए, and they are neutrophils since they grow at the neutral pH, जो कि 7 to 8 के बीच का जो pH है, that's a neutral pH. Okay, so they are neutrophils. Then as you can see in this picture, it is actually a TEM diagram, transmission electron microscopy से ये लिया गया है नाइट्रोस्पायरा की picture. Inside this picture the periplasmic space is exceptionally wide, लगभग 34 to 41 nanometer wide रहती है, which provide a space to accommodate electron rich molecule. Electron depletive structure are located in the cytosol and are believed to be a glycogen vesicles. Okay, and polyhydroxybutyrate. Now what is polyhydroxybutyrate? It's nothing but a polymer जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए हम यूज करते हैं. एंड द पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, इट्स नथिंग बट अ एनर्जी कंजर्वेटिव मॉलिक्यूल्स are found in the cytoplasm. Okay, and the lack of intracytoplasmic membrane, जो कि बहुत सारे bacteriums में present रहती है, and carboxysomes भी they lack. Okay, carboxysomes भी absent रहते हैं इनमें. Then they secrete extracellular polymers to form biofilm. Biofilm में they aggregate की form में present रहते हैं due to they secrete a polymer. Okay, then that was all about the morphology. Let's see the genome. Okay, so the genome of Nitrospira are circular. Okay, their size is 4.59 MB in length, and they are having a high GC content, that is 62%. It codes for 4500 genes, and they are hard to isolate in culture, and therefore research on its genome structure has been slow. In 2010, the first complete genome of Nitrospira species, Nitrospira diffulvi, was sequenced. It was sequenced first because it was easier to culture and it has a smaller genome. Okay, so this is about the genome of Nitrospira. Let's see the role in the nitrogen cycle of Nitrospira. Okay,
So Nitrospira is basically a ubiquitous bacterium that plays a role in the nitrogen cycle by performing nitrite oxidation in the second step of nitrification. Okay, so ये nitrification क्या है? It is actually involved in the nitrogen cycle. Okay. First let's see the nitrogen. अगर हम nitrogen को देखें तो it is a essential constituent of the biomolecule. Nitrogen दो form में आता है हमारे पास, like organic form and inorganic form होता है nitrogen का. Organic form like nucleic acid में जो nitrogen present रहते हैं, they are organic form, and the inorganic form like in ammonia. Okay, so these forms undergo various transformations by physical and biological processes. The conversion of nitrogen forms a nitrogen cycle. Okay, so nitrogen cycle is nothing but a conversion of nitrogen from one form to another form. Okay, so as you can see in this picture, this is the diagram of nitrogen cycle, and here the organic nitrogen is going to convert in the ammonia. Okay, this process is called ammonification, and here is the inorganic nitrogen also going to convert in the ammonia. That's called nitrogen fixation. Nitrogen fixation पे मैंने एक deep video बनाई हूँ, आप देख सकते हैं मेरे channel पे. And so this is called the nitrogen fixation and the conversion of ammonia into nitrite and nitrite into nitrate. It's called nitrification. Okay, so this is a two-step process, nitrification, जो कि नाइट्रोजन साइकिल में कैरी आउट होता है, एंड देन नाइट्रेट इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में जो कन्वर्जन होता है, इट्स कॉल्ड डी नाइट्रिफिकेशन. Okay, so this is the nitrogen cycle. नाइट्रोजन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. ओके, सो नाइट्रिफिकेशन, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ काम करता है नाइट्रिफिकेशन में. Okay, so let's see the nitrification. Nitrification process में ammonia is converted by nitrite and nitrite is converted into nitrate. Okay, so ammonia का जो conversion है nitrite में होता है. It is carried out in the nature by various organisms like Nitrococcus, Nitrospira, Nitrosomonas. Okay, एंड जो नाइट्राइट का कन्वर्जन है होता है नाइट्रेट में, इट इज ऑल्सो कैरी आउट बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक नाइट्रोजोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोस्पायरा. ओके, बट ओके, सो दिस इज द यूजुअल प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन. बट जो हमारा नाइट्रोस्पायरा ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अ यूनिक ऑर्गेनिज्म. क्यों ये यूनिक है? बिकॉज इट्स लाइक अ कॉमोमॉक्स माइक्रो नाइट्रोस्पायरा. ओके, इट इज अ कॉमोमॉक्स ऑर्गेनिज्म, लाइक इट कैरी आउट कंप्लीट अमोनिया ऑक्सीडेशन. नाइट्रिफिकेशन के जो दोनों दोनों स्टेप्स है, नाइट्रोस्पायरा can alone carry out these two processes. Okay, Nitrospira can also be carry out ammonia to nitrite conversion, and it can also be carry out nitrite to nitrate conversion. Okay, so हमारा Nitrospira is a unique Nitrospira, like it is a unique organism. So ammonia से directly nitrate में conversion करता है हमारा Nitrospira. Okay, so this is called Comomox nitrospira. The discovery of Comomox organism within Nitrospira redefines the way bacteria contribute to nitrogen cycle, and there's a lot of future studies will be dedicated to it. Okay, and so it is a unique organism, and we can also use this in a sewage treatment, जहाँ पर जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो हम डायरेक्टली अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके जो नाइट्रोजन साइकिल में इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है. ओके, so the genome of nitrifying chemolithoautotrophic bacterium from a genus Nitrospira encodes for both ammonia and nitrite oxidation. Okay, so these are some enzymes which are actually involved in the conversion of ammonia into nitrite. Okay, so the first step of nitrification was carried out by the ammonia monooxygenase enzyme, जो कि AMOA जीन इसको इनकोड करता है ये एंजाइम को, एंड हाइड्रोक्सिल अमीन डिहाइड्रोजनेज हाउ क्लस्टर्स करके एक जीन होता है, दैट कैरी आउट there's like hydroxylamine dehydrogenase enzyme को that codes for it. Okay, then the second step of nitrification में कौन सा enzyme involved रहता है? There is the involvement of nitrite oxidoreductase NXR gene इसको encode करता है, and the discovery of Comomox organism within Nitrospira phylum contribute a lot to the nitrogen cycle. Okay,
So as we have earlier seen that the Nitrospira is the ubiquitous bacterium, so it is ubiquitously present in the nature. Okay, so here are some like a specific habitat where हमारा जो Nitrospira reside करता है. फर्स्ट इज द एक्टिवेटेड स्लज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम. यहाँ पर हमें पता है कि नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोस्पायरा का बहुत बड़ा रोल होता है. दैट्स वाई दे प्रेजेंट देयर. देन द नेचुरल बायोलॉजिकल मराइन सेटिंग्स में भी ये प्रेजेंट रहते हैं. वाटर सर्कुलेशन बायोफिल्टर्स इन एक्वेरियम टैंक्स में भी प्रेजेंट रहते हैं. टेरेस्ट्रियल सिस्टम फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम जियोथर्मल स्प्रिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं. ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम्स में. देन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट राइस पैडीज में प्रेजेंट रहते हैं. फॉरेस्ट सॉइल स्पंज टिश्यूज में भी यहाँ तक कि वो प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो दीज आर सम हैबिटेट ऑफ नाइट्रोस्पायरा. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द नाइट्रोस्पायरा फाइलम. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड.